Let's take a coordinate system. Let's take a coordinate system. Let this is y-axis and this is x-axis. Okay. Let's when this is a body A is moving with a velocity va. Correct. Let another body B is moving with velocity vb. Correct. Let it is displaced from at a distance xa, and this has displaced at a distance xb. Okay, students. xa and xb are the relative displacement with respect to the fixed origin O. Correct. The student xba is how much? That means xba is what? The relative displacement, right? The relative displacement of B with respect to A. Relative displacement of B with respect to A is defined as, right? Is defined as, students, how much? That is xba is equal to total is xb, yes or no? Minus xa. All understood? Understood? Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Like that, if I will go for the relative velocity of velocity, हाँ, okay, ask. अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी ना, यस और नो? तो डिफरेंशिएटिंग, ये मानो कि मेरा इक्वेशन 1 मिल गया, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, राइट? डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेलोसिटी, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यस और नो? ये जो एक्स बी है वो क्या है? जो वी बी है वो क्या है? द रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? द रिलेटिव वेलोसिटी of B with respect to A is defined as that is VB minus VA. Correct? VB minus VA. It is going with some velocity VA. It is going with some velocity VB. So if I'll ask the relative velocity of B with respect to A, then we'll write VB minus VA. Correct? Students, अगर velocity को और एक बार differentiate कर देंगे तो क्या मिलेगा? Acceleration ना? Yes sir, no. Displacement को एक बार differentiate करेंगे तो velocity मिलेगा, फिर velocity को और एक बार derivative निकालेंगे तो क्या आएगा? Acceleration. Yes or no? Yes or no, students? Yes, sir. So differentiating Yes, sir. equation 2 with respect to time, उसको और एक बार Yes, differentiate sir. कर लेते हैं. So करने से क्या मिल जाएगा? The relative acceleration of B with respect to A is defined as what? Acceleration of B with respect to A, that is ABA, is equal to how much? Acceleration of B minus acceleration of A. Correct? Understood? Just write. Next, write equations of motion in one dimension can be modified as relative velocity. Right? The equations of motion in one dimension are modified as VBA V is equal to U plus AT na? So relative velocity of B with respect to A is equal to initial relative velocity of B with respect to A, yes or no? Plus A, which acceleration? Acceleration of B with respect to A into T, correct? That is means VBA means V relative. VBA means V relative is equal to initial velocity relative
plus acceleration relative into t. Understood or not? Friends, you know v is equal to u plus at. Simple equation of motion, you know v is equal to u plus at. But we are having two bodies. We want to find the relative velocity between them. So relative velocity of b with respect to a is equal to initial velocity of b with respect to a plus acceleration of b with respect to a into t. So that is vba is nothing but v relative. So v relative is equal to u relative plus a relative into t. Correct? Yes or no? Similarly, students, what relation we are having? S is equal to ut plus half at square. Yes or no? So in place of displacement, what can I write? Displacement of b with respect to a is equal to initial velocity of b with respect to a into t, correct? Plus half into acceleration of b with respect to a into t square, correct? So that is, next we can again write it, x relative is equal to u relative velocity into t plus half a relative into t square, correct? ये हो गया स्टूडेंट एक इक्वेशन, ये हो गया एक इक्वेशन। फिर दूसरा और भी एक इक्वेशन है क्या स्टूडेंट? v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 2as ना? 2s, yes sir. We can directly write relative velocity का square minus initial relative velocity का square is equal to 2 into relative acceleration into relative displacement, correct? That means in some cases by directly putting this formula we could solve many questions that is related with relative velocity. Understood these three equations of motion, how modified in case of relative? Understood or not? Understood, sir. Yes, sir. Understood, sir. Sir. Understood, sir. Okay, friends, next. The most important thing is that, friends, we say velocity of A. Velocity of A means let a body is moving here. I wrote velocity of A. I'm saying plainly velocity of A. This means velocity of A. But friends, the most important thing is that what you know? Frame of reference. क्या है? Frame of reference. Frame of reference means with respect to whom I am saying. Frame of reference. That is very important in this type of questions. Frame of reference. That means velocity of A with respect to another body. If nothing is given, then that will be treated as with respect to ground. Understood, students? That will be treated as velocity of body with respect to ground, and the ground is assumed to be rest. Ground is assumed to be rest. So it's getting my point now. I am saying a person is moving with 10 km per hour. Person is moving with 10 km per. That means with respect to whom he is moving at 10 km per hour? With respect to this ground. Understood? Ground is at rest. Yes or no, students? Yes. Velocity of ground is 0. But if velocity of ground will be in this Yes. direction, then I cannot say. Let the ground is moving in this direction, 10 km per hour in opposite direction. Then what is the velocity of the body? It will be 0. Forward it is going 10 km per hour, but backward it is again going, the ground is moving 10 km per hour. But only I am saying 10 km per hour means the ground is at rest and the person is moving with 10 km per hour. Understood? Yes, sir. So that means, students, see here. That means velocity of object and velocity of observer. That is very important. Just write velocity of object with respect to observer. Let a person who is moving in another bus, if the bus is standing, then velocity of observer is 0. If the bus is moving, then velocity of observer will be taken into consideration. Yes or no? So many cases you will be written getting questions like that. Velocity of object with respect to observer. That is equal to nothing but velocity of object minus velocity of observer. So that is nothing but velocity, relative velocity. Relative velocity is equal to velocity of object minus velocity of observer. Okay, understood, students? Understood or not?
Yes, sir. अच्छा, friends, two things may Yes, sir. happen here. Sometimes what is happening, sometimes the body may be moving in opposite direction, yes or no. This is having velocity a, this is having velocity b. Sometimes they may move towards each other, like vb is moving in this direction and va is also moving in this direction. This may happen, yes or no. They are moving in same direction, they are moving in opposite direction, yes or no. So student, it is the component of relative velocity with respect to another, the line joining them. That means if the separation is decreasing between them, students, if the separation between them is decreasing, we say that it is the velocity of approach, yes or no. If the separation is increasing, students, then velocity of separation, they're getting separated. After some time, it is at here, it is at here. The separation increased, yes or no. So that means here what I will say, velocity of separation, velocity of separation. We'll use that word. That is also relative velocity, yes or no. But here it is coming in this direction, it is coming in this direction. So what will happen after some time? They will be close to each other. They are coming to close to each other. So what we'll say here? Velocity of approach. We'll say here velocity of approach. Understood two words or not? Friends, Yes, sir. if the distance, sometimes the distance between them will be increasing, sometimes the distance between them is decreasing. So from there only you know that is direction or that is velocity of approach. Got it? Excuse me, sir. बताओ बताओ. Friends, understood? Problem solving tips for relative velocity. That means if the velocity is mentioned without specifying the frame, then assume it with respect to ground. Okay. Number two, students. Number two assumptions क्या होगा? Students, in many cases क्या होता है कि body travels in water or a body travels in air, है कि नहीं? So depending on that context, you will have to figure out whether the velocity is with respect to water or with respect to ground. Understood, students? Second point ये है कि बहुत सारे केसेस पे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पे दिया रहेगा बॉडी ट्रैवल्स ऑन, ऐसा दिया होगा बॉडी ट्रैवल्स ऑन वाटर और इन एयर. सो यहाँ पर क्या करना होगा स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट यू हैव टू फिगर आउट कि whether the velocity is with respect to water और एयर. ये आपको क्वेश्चन से देखना होगा कि ये विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दिया गया है या विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया गया है या विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया गया है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये आपको रेन एंड मैन और रिवर बोट में इस तरह की केस आएगा. ठीक है? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Yes, इस sir. तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकता है. और लास्ट पार्ट में ये मैं बता देना चाहूंगा कि स्टूडेंट बहुत सारे सिचुएशंस पे क्या होगा, you have to presume the velocities. For example, if the problem says that a man walk at a maximum 8 km per hour, understood? That क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि एक आदमी जो है ना वो 8 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है. करेक्ट? So student, if it asks you to find the velocity on the train, then you have to assume that the velocity of the man with respect to the surface. Yes or no? He is in this case in the train 8 km per hour. Similarly, the velocity of the bullet is always measured with respect to the gun. If the gun is mounted on a truck, then the bullet will have to different velocity. Student समझ पाया? यहाँ से एक गन से मैंने कुछ बुलेट फायर किया, ठीक है? I fired a bullet from the gun. So velocity of bullet कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब with respect to what? Gun ना, गन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी. अगर वही गन को मैंने एक मूविंग प्लेटफॉर्म में टाई अप कर दिया, तो वही गन को मैंने एक मूविंग प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, उसी पे टाई कर दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सो दैट इज वेलोसिटी विल हैव अ डिफरेंट वेलोसिटी. समझ में आ रहा है कि नहीं? मैन इज गोइंग एट 8 किलोमीटर पर आवर. दैट मींस ये इंसान जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है. किस पे जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर? एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे. अगर वो नहीं दिया हुआ है कुछ, अगर क्वेश्चन पे, अगर स्टूडेंट उसने क्वेश्चन पे दे दिया, if it asks you to find the velocity of the train, then you have to assume that the velocity of the man with respect to the train. Yes or no? समझ पे आया? इस तरह क्वेश्चंस देख के ही हमें पता चल जाएगा कि क्या क्या assumptions लेना होगा कुछ केसेस पे. A car moves with velocity 20 meter per second and car B
with velocity 15 meter per second, car B with velocity 15 meter per second, ठीक है, कैसे जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो दोनों, ऐसे ही जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और ये जा रहा है, कार ए है ये 20 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, करेक्ट। और स्टूडेंट्स ये उसके आगे कार ए है, सॉरी ये कार बी है वो आगे, और ये 15 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, करेक्ट। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, फाइंड relative velocity of, find relative velocity of B with respect to A and A with respect to B, ठीक है स्टूडेंट, जस्ट बताओ मुझे कितना होगा। -5 and हाँ स्टूडेंट्स, चलो अज्यूम करते हैं कि राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं, यस सर, और दोनों राइट साइड पे जा रहे हैं। सो वी आर गिवन स्टूडेंट्स VA is equal to how much, 20 meter per second, correct, and VB is equal to students 15 meter per second, correct। तो स्टूडेंट यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B with respect to A, relative velocity of B with respect to A, that means VBA, that is equal to VB minus VA, yes or no? So that is 15 minus 20, that is -5 meter per second। -5 meter per second का मतलब क्या है? So negative sign indicates that the relative velocity is in the left direction. That means the negative sign indicates, right? Negative sign indicates the relative velocity is indicates the relative velocity. Negative sign indicates the relative velocity is in right direction. Is in right direction. Sorry, it is in left direction. Understood? Because negative आया ना, क्योंकि right side को हम positive लिए हैं ना. We have taken right side as positive. That means relative velocity of B with respect to A is 5 meter per second. मतलब जब B A को देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि A जो है ना वो उससे 5 मीटर पर दूरी में पीछे की तरफ जा रहा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट समझ पे आया? Yes, sir. नेक्स्ट अगर हम वेलोसिटी ऑफ A, अगर मैं बोलूंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, तो क्या होगा स्टूडेंट? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, that means VAB is equal to how much students? VA minus VB, yes or no? So that is VA 20 minus 15। जब A दिखेगा B को तो उसको क्या लगेगा कि 5 मीटर पर सेकंड पे वो जा रहा है आगे की तरफ। So that means पॉजिटिव साइन यहाँ पर जो आया, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स स्टूडेंट्स, क्या इंडिकेट करता है पॉजिटिव साइन? दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन, यस और नो? इंडिकेट्स द रिलेटिव वेलोसिटी is in right direction. The relative velocity is in right direction. Understood? So here the separation between A and B is decreasing with time. Listen, यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो जब ये दोनों आपस में जा रहे हैं, ये 20 में ये 15 में, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो रहा है दोनों के बीच में? डिक्रीजिंग। सो दैट्स, इसीलिए हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ A with respect to B is 5 मीटर पर सेकंड, यस और नो? तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच of A with respect to B is how much? 5 meter per second. Understood? समझ पे आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे ठीक इस तरह और एक क्वेश्चन बताओ। हाँ बताओ, कुछ किसी को कुछ पूछना है? Anybody wants to ask anything? बताओ कि आप समझे कि नहीं। फ्रेंड्स मान के चलो अभी इस तरह मैंने ले लिया, और एक एग्जांपल, वो क्या हो रहा है, उसी में सेम डायरेक्शन पे जा रहे थे। अभी मैंने क्या कर दिया, कार ए जो कि 15 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है,
और यहाँ पर कार बी जो है वो इस तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड पे स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड? अपोजिट डायरेक्शन पे जा रहा है। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा velocity, relative velocity of b with respect to a. We have to find relative velocity of b with respect to a and a with respect to b. अभी तो आप समझ गए, बताओ मुझे अभी स्टूडेंट्स, अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे, अगर राइट साइड वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो लेफ्ट वाला डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे ना? ये सब नो, ये सब नो। तो वी ए क्या लेंगे, Yes, sir. प्लस 15 लेंगे या माइनस 15 लेंगे? माइनस 15 मीटर पर सेकंड लेंगे, करेक्ट? वी को क्या लेंगे, राइट साइड को 20 मीटर पर Yes, सेकंड sir. प्लस। Understood? So now we want to find the relative velocity of b with respect to a. That is vb minus va na? That is equal to how much? 20 minus of minus 15 is equal to कितना हो गया? 35 मीटर पर सेकंड ना? That means b को क्या लगेगा स्टूडेंट्स? a अपने से कितने दूर, कितने वेलोसिटी में जा रहा है? 35 मीटर पर सेकंड पे दूर चला जा रहा है। समझ पे आ रहा है? Yes, sir. तो पॉजिटिव साइन मतलब क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन। Relative velocity is in right direction. Understood? Similarly, student, relative velocity of A with respect to B निकालेंगे। Relative velocity of A with respect to B निकालेंगे तो क्या करेंगे? VA minus VB करेंगे ना? VA minus VB. That is minus 15 minus 20. So क्या हो जाएगा? Minus 35 मीटर पर सेकेंड। Understood? Minus 35 मीटर पर सेकेंड क्या है? Relative velocity अभी किस तरफ पता चलेगा? लेफ्ट साइड की तरफ। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि relative velocity is in backward direction? Yes. Negative sign indicates relative velocity is in backward direction. Is in backward direction. So student, एक बात तो आपको पता चल गया होगा, student, separation between A and B is increasing with time. Yes or no? Left हो या right हो, separation between them A and B is increasing with time. Hence अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा velocity of separation मतलब क्या होगा? 35 मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में पूछा velocity of separation, क्या पूछा? velocity of separation. Understood? क्या होगा velocity of separation? 35 मीटर 35 meter per second. अंडरस्टूड? सबको समझ पे आया? Yes, sir. Yes.